of our club. Now I take you to permanent projects. We have undertaken a few permanent projects which includes development of Vivekanand Kalyan Kendra Udal Bakhara Guwahati, a private school run by retired school teacher to serve the underprivileged children who come from BPL families and are unable to afford the formal education. The school helps these students by charging a very nominal fees of ₹100 only per month. Our club has undertaken construction of new school building extension with 3 large classrooms and a computer lab. The facility will become operational this year. Our members wholeheartedly contributed financially and also personally in the construction activities of the club. We celebrate Children's Day, Teachers' Day, Independence Day and Republic Day regularly at the school premises with children and teachers of the school. We have made children's park, toilet for girls in the school. Lions as a whole have earned a good name in the entire area. Apart from above, we have installed water filters and coolers at various schools and colleges of Guwahati city and look after their regular maintenance. Participation in the district mandated activities. During the year, we wholeheartedly participated in all the activities mandated by our district governor. Some of the programs are flood relief, Haat Bazaar, rice bag challenge, umbrella distribution, cycle rally, and Australian wildlife relief contributions and some more others. Feed the Hunger project. During pandemic, our club leadership took active role in serving cooked food as well as dry ration to most deprived people in Guwahati city. We served food to approximately 10,000 people during pandemic, and our president along with Lion Pramod Harlalka and others took active part in food distribution, following all safety norms and served with humility. We undertake regular supply of 72 liters of milk at St. Jude Child Care Center for Children located at B. Barua College, Cancer Hospital, Guwahati. Tree plantation. We undertook 4 activities of tea plantation in and around Guwahati, planting 640 saplings during the year. We had arranged to monitor these saplings planted by us so that it flourishes with time and emerge as big trees. Pediatric cancer. Our members took active role and celebrated their birthdays with cancer affected children at St. Jude, bringing some happy moments for them. We also organized a storytelling event there in presence of our district governor, which made children laugh and share happiness. As stated earlier by me, we provide a week's milk supply to the institute every month. This is our signature activity and will continue in the years to come. Our other service activities. We also undertake Lions other core programs like Vision, Diabetes, apart from Peace Poster, New Voices, Lions Quest, etc. We conducted 10 days yoga program at our adopted school for benefit of children by our own yoga trainer, Lion Ashok Agarwal. We donated automatic sewing machine for mask making to Women NGO and also 2 sewing machine for skill development of special children. Cultural celebrations and fellowship. We celebrate all important Indian festivals like Holi, Diwali, Rakhi, New Year, etc. with pomp and gaiety. Most of our club members are present with their family during the celebration with full enthusiasm. Fellowship is nurtured during these celebrations. We have conducted our board and general meetings regularly every month without missing. Even during pandemic, our spirit of meetings did not end and our club have gracefully adopted to the new virtual way of meetings and all the activities are taking place on virtual platform as usual. At the end, our club would like to acknowledge the help and support provided by dynamic Lion leader and district governor Lion Sudhir Kumar Chaudhary and his team in guiding our club to undertake service projects from time to time and improve the outlook of our club. Now I present before you a short PowerPoint presentation. I request host to kindly play PPT for all our viewers. Thank you. PPT please.
proper presentation. I now hand over to MOC for further proceedings. Thank you पुरुषोत्तम जी for such a nice presentation. दोस्तों आप सबने देखा कि लास्ट ईयर हमारे क्लब ने कई अच्छे काम किए थे और हो भी क्यों नहीं, हमारे ऑफिस ब्यूरोज इतने एक्टिव थे. संजय छाबड़ा जो अपने फील्ड में कंस्ट्रक्शन में एक लीडर हैं, और पुरुषोत्तम जी गगड़ के ऑफिस में तो हम बैठे ही हैं, देख रहे हैं कि कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट मैनेज्ड ऑफिस है. कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, आपकी टर्म बहुत इफेक्टिव थी, आपकी टर्म थी बहुत कारगर. एक अच्छे लाइनिस्टिक टर्म की बहुत बहुत बधाइयां हो लायन जैन, छाबड़ा और गगड़. Friends, we have with us our PDG and our own club member, Lion S.S. हरलालकर. वो हमारे क्लब के लिए हमेशा ही एक बहुत अच्छा गाइड रहे हैं. May I request Lion S.S. हरलालकर to please address us with his inspiring words. Lion S.S. हरलालकर, please. Very young and energetic President Lion Sanjay Chhabra, Chief Guest of this evening, Lion Rajkumar Ingania, the District Governor of District 322G, Installation Officer Lion Sangeeta Jatia, past International Director, Galaxy of the past District Governors, Vice District Governors, visiting Lions, and my friends. Today is the great occasion of installation of the President as well as celebration of the Charter Night of Lions Club Guwahati Greater. This occasion is more important for two reasons. One, that in a COVID pandemic, we are holding it in a virtual platform, which we have never heard in the past or never done in the past. And second reason, that we are empowering the Lady Lions to take up the Lionistic services in their own way and to really deliver the goods. Today we have got the PST as well as all the vice presidents. They are our Lady Lions. We are proud of them. They are very well equipped, and in a very shorter time they could be capable enough of taking up their offices. And this situation, we could turn it only after a long time. International, though, in the year 1987, in Taipei Conference, allowed half of the human population, that is the ladies, to join the Lions. And accordingly, today I find almost the 30% membership as well as the leadership in the world is of ladies. And not only that, had it been not being allowed, probably our membership would have dropped nearly to 1 million. And today I am hopeful that if they are being encouraged, we are definitely to achieve a very goal of 1.5 million membership. Even though this year we have lost 60,000 membership, but in the coming year, we are definitely going to aid a lot. During my last 50 years in this movement, I have seen the 3 generations to work. As an example, I would like to say that the grandfather of our installation officer, B.L. Lahoti, whom I brought to Dhubri for inauguration of the club, Lions Club of Dhubri, in the year 1971, while the Chief Minister of Assam, Didan Mahendranath Chaudhary, was present. And secondly, while I was the governor, I got Lion Prem Lahoti, her father, as the international director. And today I am very happy that the 3rd generation, Lion Sangeeta ji, is present with us. During this last 5 decades, a lot of water has flown. The services have changed. Human attitude have changed, and accordingly, we the Lions have to work in a different manner. This Lions Club Guwahati Greater was born in the year 78-79 by the joint sponsorship of Lions Club of Narangi as well as Lions Club of Guwahati, and with 2 extension officers, which led Lion G.L. Burma
as the president, the club had been doing very well. Till now, 2 past district awards had been produced, Lion J.K. Saudi and myself. And at the same time, 100+ members, they are not only active and sincere, but they are really delivering the services. This club is known for its punctuality. Club is known for its discipline. Club is known for its activeness. And I'm sure that in the coming time, much more feather will be added to this club. On this occasion, I call upon few words for the incoming Lion President with a Hindi couplet. बढ़ो तो यूं बढ़ो, बढ़ो तो यूं बढ़ो, मंजिल पास आ जाए, चमको तो यूं चमको कि सितारे मात खा जाए, मुस्कुराओ तो यूं मुस्कुराओ, फसलें बाहर आ जाए, लायंस की सेवा करो तो यूं करो, डिस्ट्रिक्ट थर्रा जाए. This should be our goal, and I am sure we are definitely going to achieve that very goal with this zeal, with this arts, and incoming president and our team is definitely having that arts. Now it is time that I should conclude it by conveying my thanks to all the members, those who have attended today, and with this a Hindi couplet. चमन की खुशी के लिए एक बात काफ़ी है, समा की ज़िंदगी के लिए एक रात काफ़ी है, भूल जाने को तो ज़िंदगी में है लाख लम्हे, याद रखने को मगर आज की ये लायंस की ये रात काफ़ी है, ये रात काफ़ी है. With these words, my dear friends, I am concluding and at the same time conveying thanks to all of you. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच लायन SS हरलाल का. हाँ, हम सब भी आपसे थर्राते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट तो हमारे काम से थर्रानी ही चाहिए. You very correctly said. Friends, last year Lion Sanjay Chhabra और Lion पुरुषोत्तम गगड़ का बहुत ही eventful term गया, and everybody put in their time, money and efforts for the successful ending of this Lions Club. But I mean this Lions year, I'm so sorry. पर कुछ members ने खास काम किया था जिनको संजय छाबड़ा recognize करना चाहते हैं with his awards. May I request Lion Sanjay Chhabra, our immediate past president, to please present his Lionistic Awards for the Lionistic session 2019-2020. A lot of members of our club have devoted their time, energy, and efforts for serving the people in need during my tenure. I would like to present these members with mementos as a token of my love and appreciation for all the good work they have done for humanity. Making a Difference Award. Lionism can work best when all come together in small and big ways to do the most we can. The following awards are for members who unfailingly always turned up and contributed ideas, monetary help, and most importantly, their time, helping us serve to the best of our ability. It's my privilege to present the award for making a difference to the following members. Lion Amit Kabra, Lion Anita Mittal, Lion Aparna Agarwal, Lion Ashok Jajodia, Lion Asha Budakia, Lion Ashok Killa, Lion BP Khemka ji, Lion Bhaskar Datta ji, Lion Vijay Kumar Jaju, Lion Jyoti Agarwala, Lion Kamal Sharma, Lion Kishore Budakia, Lion Lalita Choraria, Lion Manju Jain, Lion Manirul Hassan, Lion MP Agarwal, Lion Namrata Chaudhary, Lion Narayan Agarwal, Lion Anshi Das, Lion Neelam Mathur, Lion Parvati Halalka, Lion Pradeep Agarwal, Lion Prakash Kabra, Lion Prem Kumar Agarwal, Lion Ramesh Jain, Lion Ranjana Jaju, Lion Ratan Khakolia, Lion Sanjay Bajpayee, Lion Sanjay Khemka, Lion Sarita Devi Jain, Lion Shalini Harlalka, Lion Asar Basu, Lion Asas Agarwal, Lion Sumitra Agarwal, Lion Sultana Akhtara Ahmed, Lion Sunaina Sabu. The Great Service Award
Any Lioness Day year is recognized not by the people leading it, but more by the work we do. This year would not have been a memorable one without the contribution and hard work done by these members, presenting the Great Service Award to the following members. Lion Ajay Kumar Nauka, Lion Arvind Kejriwal, Lion Ashok Kumar Agarwala, Lion Bajrang Lohia, Lion Chensuk Betala, Lion Kavita Gaggar, and Lion Neeru Kabra, and Lion Sajjan Agarwal, and Lion Satish Mittal, Lion Sunita Kejriwal. Diamond Service Award, striving to always deliver successfully and unfailingly. The award for Diamond Service goes to Lion Vimla Jajodia and Lion Bharat Goswami. Exceeding the Expectation Award. It's always a heart-touching moment when someone goes out of his way to serve in the best spirit of Lionism. Presenting the Exceeding the Expectations Award to Lion Bimal Kejriwal and Lion Rajesh Jalan. The spirit of Lionism. सेवा ही धर्म जिनका है, उनमें ही सच्ची श्रद्धा है. The one who serves in the spirit of always doing the best of our abilities, presenting the Spirit of Lionism Award to Lion Bela Nauka. Platinum Service Award, dedication at its best with an unfailing smile and undefeatable energy, presenting the Platinum Service Award to Lion Rupa Gaggar. The Storyteller Award, the man who spread the ideas of Lionism by telling people the good work we always try to do. The Storyteller Award to our very own journalist, Lion Darash Mathur. Beyond the Call of Duty, it's truly inspirational to see this man who put serving the ones that needed help over his own health and safety. This member makes us all want to be better people, seeing him excel in all aspects. I am honored to present Beyond the Call of Duty Award to Lion Pramod Harlalka. The Make It Happen Award, a force to reckon with and a magic worker, presenting the Make It Happen Award to Lion Suresh Sabu. The Guiding Light Award. A guiding light keeps us on the right path, making sure that we do the best we can. Presenting the Guiding Light Award to our own PDG, Lion SS Harlalka. The Roaring Lion Award. A friend, a guide, a confidant, a member who has made my journey through presidency a lot easier than I expected, sometimes asked, but other times giving help selflessly, a tireless and ever-inspiring member, the Roaring Lion, Lion Suresh Gaggar. Calmer of Storms Award. This award is for the man we all look upon in times of chaos and confusion, and I am greatly honored to be presenting the Calmer of the Storms Award to Lion Kamal Kumar Jain. The Hidden Gem Award. Our discovery this year was a hard-working member who always came out on top, completed every job successfully, dotted all the I's and crossed all the T's. Presenting the Hidden Gem Award with great honor to none other than my treasurer, Lion Binod Kumar Jain. Consider It Done Award. As a president, the most support you can get are from your secretary, sometimes to keep you in check, but most times to depend on. That's why I feel greatly honored in presenting the Consider It Done Award to Lion Purushottam Gaggar. Chief Happiness Officer. The most important way to successfully complete any task is to do it happily and stress-free. And I couldn't have asked for a better support in this institution as well as back home, presenting the award for the Chief Happiness Officer to my equal and beautiful partner, Lion Aruna Jain. Thank you very much, friends. Arvindji, you can take it forward from here. Thank you. हेलो, क्या बात है संजय भाई, आपने तो सच में छक्का मार दिया। इतने नए तरीके से अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं
नहीं तो हमेशा यही लायन ऑफ द ईयर, सपोर्टिंग लायन, बेस्ट दिस दैट, एंड आई थिंक यू हैव सेट अ न्यू ट्रेंड ऑल टुगेदर. एंड द बेस्ट पार्ट आई फाउंड इज कि योर अवार्ड्स, द हेडिंग्स, दे मैच विद द वर्क दे पुट इन. कांग्रेचुलेशंस. और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा सारे मेंबर्स की तरफ से कि हमें हमारे अवार्ड्स को घर पे या ऑफिस में सजा के रखने की आदत है. तो आप बजट का मत सोचिएगा, पैसे बचाने की मत सोचिएगा. As soon as the lockdown opens, we expect कि आप ऐसे अवार्ड्स को बाकायदा प्रिंट करके अच्छी सी प्लेट पे बना के हमें भेजोगे. These awards have already been made, and I Okay. will surely deliver it to each and every member of our club. Okay. That's a consolation. So nice. We'll be expecting your awards. Friends, our club has completed 40 years, more than 40 years, 79 to 2020, 41 years. And we are fortunate, we are lucky to still have, I'm sorry, one charter member amongst us. Our club members visited this charter member on this charter anniversary and sought his blessings. May I request the host to please play that event. ये देखिए, रूपा भाभी, नीरू भाभी, हमारे संजय भाई, और यहाँ की मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्लॉक हो रही है. सुरेश जी गग्गड़ और संजय जी छाबड़ा ये बासुदा के घर पे गए थे. मैं बासुदा के बारे में आपको बता दूं कि हम साल में बहुत डिनर्स लेते हैं, पर सबसे टेस्टी डिनर हमें वही लगता है जो उनके घर पे जाके हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा के दिन लेते हैं. He invites each and every club member and we really have a very nice time. So we visited his place. Basuda is not keeping physically very well. He's 82 years and honored him with a shawl. ये हमारे प्रेसिडेंट संजय छाबड़ा उनको शॉल से ऑनर कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू कि लायन बासु हमें इतने अच्छे से, इतने प्यार से गाइड करते हैं. किसी की भी बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो, ही नेवर मिसेस इट. ये देखिए, वी कैन सी ऑल आवर मेंबर्स हियर, रूपा भाभी, आई मीन आवर इनकमिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, एंड संजय छाबड़ा एंड सुरेश गग्गड़. बासुदा के साथ लिए हमें केक भी बना के ले गए थे और अब वो देखिए केक काटेंगे. इट वॉज रियली वेरी नाइस ओकेजन जब हमने जाके उनके घर पे सेलिब्रेट किया था. एंड यू कैन सी दिस केक कटिंग सेरेमनी जो चार्टर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के तौर पे हम इसको एंजॉय कर रहे हैं. नीरू भाभी बासुदा को हेल्प कर रही हैं, एंड डिस्पाइट हिज डायबिटीज एंड ऑल दैट, ही वाज रेडी टू हैव दैट केक. देखिए उनको वो परसुएट कर रही है कि दादा थोड़ा केक तो आपको खाना ही पड़ेगा. ऊपर से शायद उन्होंने चीनी भी नहीं हटाई है उसके ऊपर से. नेहा, मेरी स्क्रीन इस तरफ की थोड़ी ब्लॉक हो रही है, शायद ये ठीक नहीं हो पाएगा. आई एम नॉट सो कंप्यूटर सेवी आल्सो. पर हाँ, ये बासुदा ने केक खाया और नीरू ने उनका आशीर्वाद लिया, संजय छाबड़ा ने उनका आशीर्वाद लिया. दोस्तों बता दो, हमारे क्लब में 50 साल का पूरा एज गैप है. आई मीन 50 साल के डिफरेंस के मेंबर्स हैं हमारे पास. और अब बासुदा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बोले. बासुदा प्लीज. लायन संजय छाबड़ा और इनकमिंग प्रेसिडेंट लायन श्रीमती नीरू काबड़ा, Chief guest of the evening, District Governor Rajkumar Ringania, Installation Officer, Past International Director, Srimati Sangeeta Ji Jatia. I am the most privileged person, I think, to be a member of this great club, Lions Club of Guwahati Greater. Since last 43 years, I have been the member of this club, and I'm really happy that I have most beloved members of our club, and one of our past Lioness Club president, Neeru Kabra, has become the
president of this club for the incoming period. I am really honored with the members of our club since last 43 years, and I have been getting love and affection from all the members of our club since last 43 years. So it is my proud privilege to be here today, and I am really to see our most learned amongst us, and also our new district governor. And with this, I thank to all of you, all of my members, for loving me since last so many years. Thank you very much. थैंक यू सो मच बासुदा। अगर संजय छाबड़ा को इंस्पायरिंग लाइन का अवार्ड देते तो शायद वो बासुदा के लिए ही होता। Friends, we have come to the most important point in the agenda of today's meeting, that is installation of new board by our PID Lion Sangeeta Jatiya. मैं आपको बता दूं, जब भी मुझे तो मैं उनको Facebook पे नहीं ढूंढता, मैं उनको YouTube पे नहीं ढूंढता, मैं उनको Google पे ढूंढता हूँ। And she is so charming. उनको सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि I am really happy and rejuvenated whenever I listen to her. और हमारे क्लब की खुशकिस्मती है, we are lucky to have her amongst us. Virtual meetings का ये भी एक फायदा है। May I request our club regular introducer, Lion Bela Navka, to please introduce our installation officer, past international director, Lion Sangeeta Jatiya, the ambassador of goodwill. Lion Bela Navka, please. A very, very warm and safe good evening to you all from the northeast corner of India, that is Guwahati. Thank you, Presiding Officer Lion Sanjay Chhabra, for entrusting me with the most honorable task of introducing a highly esteemed personality, our beloved past International Director, Lion Sangeeta Jatiya, to the webinar today. Well, friends, leadership is hard to define, and good leadership even harder. Great leaders don't set out to be, they set out to make a difference. Today amongst us, we have a leader who has the power to change perception, inspire and empower others. A lady who has served at the highest pedestal, can take all the right decisions and at the same time has the compassion to serve. जी हाँ दोस्तों, अब मैं जिनका परिचय पाठ पढ़ने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री है ये, सब संभाल लेती है। स्त्री है ये, सब संभाल लेती है। आंगन की रंगोली हो या फिर हो दफ्तर की फाइलें, आंगन की रंगोली हो या फिर हो दफ्तर की फाइलें, परिवार की चिंता हो या फिर सेवा की लाइनें, परिवार की चिंता हो या फिर सेवा की लाइनें, कोलकाता मिड टाउन लायंस क्लब की बागडोर हो या फिर लायंस इंटरनेशनल का पदभार, कोलकाता मिड टाउन लायंस क्लब की बागडोर हो या फिर लायंस इंटरनेशनल का पदभार, सारे कार्यों को अपनी साड़ी के पल्लू से बांध लेती है ये, सारे कार्यों को अपनी साड़ी के पल्लू से बांध लेती है ये, स्त्री है ना सब कुछ बखूबी संभाल लेती है ये, स्त्री है ना सब कुछ बखूबी संभाल लेती है ये। To be very true, our past international director, Lion Sangeeta Jatiya, needs no introduction at all, as she holds a tall figure in Lionism, and each one of us are very well acquainted with her very significant name, Sangeeta. In other words, the flow of Sangeet in Hindi and a form of harmonious singing in English.
In short, her very name rings a tune of melody in every heart. Lion Sangeeta Jatia, a progressive MJF and a Heritage Club member, stepped her footing into Lionism way back in the year 1988 and hails from Kolkata Midtown Lions Club. She served on the highest pedestal of Lionism as the International Director of the International Association of Lions Clubs for the Lionistic years 2012 to 2014. Unraveling only a few aspects of her life, let me tell you that Lion Sangeeta Jatia has innumerable feathers and awards to her cap. Doesn't this call for a thunderous round of applause? Lion Sangeeta Jatia is an economics graduate who served as the faculty in the Faculty Development Institutes, Senior Lions Leadership Institutes, Regional Institutes, and in the DG and VDG Schooling of India level, and also as the DG Group Leader at the International Convention for 5 years. She also stood out as the chairperson for the DG seminar held at Las Vegas in 2018. She played an instrumental role as a member of the Mission 30 team, Team 20K, and also served as the GMT area leader. Being a lady, Lion Sangeeta Jatia holds a soft corner for women, and hence she rendered special services as the International Family and Women Coordinator, a special position created only to enhance worldwide. Due to her devotion and dedication in Lionism, she was also appointed to the 2017 to 2020 Global Action Team, where she served as the Constitutional Area Vice Chairperson for GLT assigned to Constitutional Area 6. She also got appointed as the Global Chairperson for the New Voices 2018. Her services in the Lions magazine, right from the year 2004 to 2010, were really remarkable. She also holds a good rapport with the past international director, Lion AP Singh, and together they have set up a web-based training academy, namely the Eastern India Lions Leadership Academy. Lion Sangeeta is a passionate traveler who has traveled worldwide and attended various US-Canada forums, Anji forums, Europa forums, OSCEAL forums, FOLAC forums, All Africa conferences, and ISAME forums. Leadership matters, and not everyone becomes a good leader. Hence, I would like to add a small quote here and say that her very presence in Lionism is a treasured part of all the riches in our hearts. Her devotion in Lionism sings the golden song and keeps our spirit high and strong. We are grateful to her for all our days, for walking into Lionism's ways, Her selfless contribution towards Lionism have struck a special chord in the hearts of many. And our being sings with joy to have a gracious presence amongst us today. With these words, let me welcome a very rare and precious gem, an emerald lady, a most amicable and humble person, so soft-hearted and gentle too, a lady of high intellectuals, a dynamic personality. Yes, friends, let's welcome our very own past international director, Lion Sangeeta Jatia, with a thunderous round of applause. Thank you. Long live Lionism, long live Guwahati Greater. ग्रेट बेला भाभी। दोस्तों, आपकी थंडरस अप्लॉज तो हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि सबको हमने म्यूट किया हुआ है। आप कृपया अपने हाथ उठा के तालियां बजा के दिखा दीजिए। Can we have a clap from everybody? संगीता जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको आज सुनने का मौका मिलेगा। It's really a pleasure for all of us. May I request Lion Sangeeta Jatia, PID, to please take the stage, please take the virtual screen and proceed with her speech and installation. Lion Sangeeta Jatia, please. Thank you so much. Presiding officer, a fantastic year I see as a president. Wow, this was something fantastic, really. The master of ceremony, who was very, very capably led the entire proceedings. And of course, Bela ji, who introduced me so beautifully. Even I did not recognize myself. Fantastic, wow. It's been a wow time for me as I see this meeting. और सिर्फ वाव आज नहीं, जब हम बात करना चालू करें और सुरेश जी का मेरे पास पहले फोन आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की हर स्टेज में, he kept me involved, not only kept me involved, but ekdam, he gave me that emotional tug also that he is from Jorhat and how the relations came up, and everything has become a beautiful event today.
that I am here in your installation ceremony, and it has been a pleasure. Believe you me, बहुत installation ceremonies ये last 10 दिन में हमने देखा है, और कई installation ceremonies में गए हैं, कई में address किए हैं, but how professionally you've run this, I think this really deserves a tremendous applaud. Fantastic. I love the way you have conceptualized it. I love the way you've planned it, and I know a lot of planning has gone into it. And this is what I would like to stress here. Success and excellence, are they synonymous? Excellence, आने से ही क्या success आ जाता है? Definitely yes. Definitely it makes a lot of difference that you have excellence आए और success आ जाए. और excellence यदि हम अपने habit बना लेते हैं, there is no doubt that you can actually go into people's hearts. And it does not require something too big. You know what? Today I learned a very, very powerful lesson from your president when he was giving the awards, and the way he personalized each award, that truly told me that an award is not an award until it is actually meant for a person. And today he absolutely did that so beautifully, and I can say that shows that you've even taken care ki kisko award there is just not names, but people who've actually worked, and you thought it fit to recognize them. These small little things can make a tremendous difference. Small little things can go a long way to show that yes, your club, I don't need anything else. I just need being here to understand what a rich culture you have. You know, you're getting Basudha to come and speak, you're getting Harlalka ji to come and speak, and you're getting all the entire 2DG teams to come together. I think that shows that Guwahati Greater is not an ordinary club, but is a club which needs to be watched. At least I'm going to be watching you from now onwards, because I have seen and I have witnessed in the last 45 minutes that I've been with you, what tremendous, I mean, a club I would like to be part of. A club that I would feel that yes, it's got all those values and traditions. And my dear friends, clubs like yours, and I'm not saying it, I wouldn't say this to anybody. And all my friends who know me very well know that I always am pretty blunt. If I don't like something, I say it. But today I am truly overwhelmed. Really, truly overwhelmed by the way you have organized it and the way you are presenting this program. It's a lesson that we all need to learn. और कई lessons हमारे को इस COVID-19 ने सिखा दिया है. कई lessons ऐसे जो शायद हम सीखना भी नहीं चाहते थे, और जो lessons कभी हमने सोचा भी नहीं था possible, आज हमारे को इस circumstances ने, इस situation ने सिखा दिया है. पर if today you and me can overcome the situation, if today we can make this depressing thought कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, यदि हम इस तरह के virtual platforms create कर सकें, who wants to go out in any case? We would rather be here, right? Comfort of our homes, a cup of tea besides us, and you enjoy the fellowship, you enjoy the friendship, and you also start planning as to how we can do the service. I saw your service programs. I also saw that it did not stop you. The COVID did not stop you from serving. And you're right, you said that your members have gone out, risked their lives. And what really touched my heart was the fact that aapne ek mask making sewing machine diya to somebody. These small things show a character. And these are the small little things we need to bring into each of our lives. I think that is what is important. We need, it's not the big things. बड़े काम तो हर कोई कर ही नहीं सकता है ना, और बड़े काम शायद आप और हम करने के capable ही नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीजें यदि हम करते जाएं और करते रहें और ये constant करते रहें, इसको हम अपनी habit बना लें, I think that is what's really going to make us truly a lion. It's not wearing a label pin which makes you a lion, does it? Not at all. What makes us a lion is the way we serve. It's not about the lakhs of rupees that we are sending, but the way we are serving. What are we doing? Are we being considerate or not? Somebody very rightly said the other day, you know, it's not about only serving, but it is about thoughtfully serving. Abhi zamana hai that we think and serve. We do things thoughtfully. Why serve? आज किसी से भी बात भी करें
हमारे को with a lot of thought we have to talk to that person. Times are such, my dear friends. और time ने हमें सिखा दिया है how we need to probably introspect. How do we need to reconnect? We need to look into ourselves. We need to see what is really necessary. सारे extras को हटा दिया है. समझा दिया है कि you do not need so much in life. What you need is simple food, simple clothes. Definitely we need an internet connectivity. That's for sure. Probably that's the only thing which is complex that we need to have. If we have this, we are set in life. As we go, many of us getting quarantined, many of us in isolation, many of us, I think this is the only thing which is keeping us alive and which is keeping us going, which is keeping us cheered up, which is making us show, yes, there is a light in front. And Lions, आज आप लोग जो इस तरह से साथ आए हैं, I think the Lions of Guwahati, not only Lions of Guwahati, probably the Lions from all over your district who have joined in today. And today you see this world is becoming so small. कितनी छोटी हो गई है दुनिया जब हम बिना ये borders के, बिना कुछ करे अपने घर से हम connect कर पाते हैं. Let's take advantage of this. Let's use this situation to our advantage. Let's turn this challenge into our opportunity. And if we can break those barriers, break those shackles, I think we can make a tremendous difference. Who would have thought, यदि 3 महीने पहले आप मुझे बोले होते और मैं कहती कि नहीं मैं गुवाहाटी आ नहीं सकती, आप बोलते कि नहीं या तो हम installation नहीं करेंगे या फिर हम installation, we will do it with somebody else, but we'll do it physically. We would never have thought it possible that we would have done a virtual thing. Times have changed, my dear friends. Our mindsets have changed. We have been forced to change our mindsets. So it's important that we adapt as fast as possible. We change as fast as possible. और हम हर कुछ में एक वो stamp of excellence देना चाहिए. Excellence is not something which is, again, it's not rocket science. It is something which just takes 1 minute, just 1 second really. अपने mind की जो ये button है ना, थोड़ा सा उसको ऊंचा नीचा कर दिया, there is excellence. It's all in your hands. Yesterday, Shiv Khera was doing a seminar and he said, we all have so many choices and there are so many choices for everything that we do. Till we make a choice, everything is in our hands. But after the choice is made, nothing is in your hands because you've made the choice. So when we make a choice, we have to do that very, very properly, पूरा thought देके. और आपने जो ये fantastic choice किया है, ये एक PST को लेके आने का, not only PST, a lot of your board members also women. I do not say that because because I believe in women. I do not say that because I believe that they are much more efficient. वो तो आप लोग सभी ने, आप लोग ने भी कहा. We all know that they are more efficient. I don't have to say that. But I really believe you've done a fantastic thing is because you have seen the path of progress. You have seen, you've been visionary in that, and you've decided, yes, if you can do that and make that difference, your club can definitely take a height which is unparalleled. And I wish you all the best. And I'm sure that your good decision, your visionary thinking, your thinking that yes, that वो ना mind के हम button को हटा दिए और ये थोड़े दिन बाद, maybe a year or 2 later, we won't even care it's a man or a woman. We will not even talk about कौन है. It's going to be about a good human being, a good person. That is what is important. I wish and pray that हम ये shackles हटा सकें. हमारे को लोग बोलना बंद कर दे that they are all women team. Sometimes I get upset when I hear these things. It's a good team. That's what's important. But yes, you have chosen to get the best team to your club. I think that's a fantastic decision which the entire members of your club has taken. So चलते हैं installation ceremony में. Or before I go on to the installation ceremony, may I request the host to please show the beautiful PowerPoint that you have presented, and uske baad mein I will do the do the oath taking or whatever is required. So may I request the host to please go on with the PowerPoint presentation.
What a wonderful team. What a wonderful team. And you've made my life so simple. You've not only told me a little about them, but also you have been beautifully able to, I can see that your entire board resonates as a kind of a duties that is expected out of them. So fantastic once again. Again, overwhelmed by your great thoughts. So let's move. My job can we have the spotlight on our tamer now? Namrata Chaudhary. Namrata ji, you are the tamer for the year 2021. Can we have the spotlight if possible on her so that even I can see where she is? Amongst the 109 people, probably difficult for me to hunt her out. So if the host would probably do the honors and put her on the spotlight. Namrata Chaudhary. I think Namrata, you have to speak out a bit. Give us a minute, ma'am. You are highlighted. Okay, you can just put the spotlight on her, so that will be great. Thank you. So Namrata ji, you are the lion tamer, the tamer for the club for the year 2021. Tamer's duty basically is very simple. Tamer's duty is normally रहता है कि आप कैसे अपने banners को लेकर आएं, आप अपने you keep the gong gable right ready over there, and every meeting will only start if the tamer is there. And the tamer has to be present in every meeting and make sure that all the arrangements are done very beautifully. In a virtual meeting, gong gable
बैनर शायद आपको लाने का कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, पर there will be a different kind of responsibility for you. You will have to make sure that it is displayed properly. You'll have to make sure that the president or the secretary or whoever is in the chair has it there, right there. So the gong and gavel has to be present. The banner has to be there. And साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा. Normally हम कहते हैं tamer has to make sure that the environment is very nice. Now environment तो अच्छा रहना ही पड़ेगा. और एक virtual meeting में environment क्या होती है? आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें. यदि आप जूम प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा जहां चूज करिएगा जहां सब कोई आराम से आ सके. पासवर्ड थोड़ा इजी बना दीजिएगा ताकि लोग आराम से एंटर कर सके. पासवर्ड नहीं भी बनाए तो चलता है. आफ्टर ऑल लायंस क्लब में जितने लोग आए उतना ही अच्छा. तो आपका काम यही रहेगा टू मेक श्योर दैट इन द ईयर 2021 you will make sure that the clubs, the assets, the gong gavel and the banner and the virtual platform जो हमारा है वो ठीक से मेंटेन हो और ठीक से चले. ये काम क्या आप करेंगे नम्रता जी? I'm sure she will. We'll move on to the tail twister line. Pradeep Agarwal. Pradeep ji, if you are there, oh wonderful. I can see the tail twister. Your job. आपको मालूम है ना क्या करना पड़ेगा आपको और आपका तो सिर्फ उन्होंने लिख ही दिया कि आप कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को हंसते खेलते आप उसको एकदम सुलझा देते हो. ये तो काम करना ही आपको. पर साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में उसकी भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. तो कैसे करेंगे हम? यदि कोई गुस्सा हो रहा है तो क्या करेंगे? बहुत इजी है. को होस्ट बन जाइएगा, सबको म्यूट कर दीजिएगा. वही काम है आपका. बहुत इजी. आपको पहले हमारे अरविंद जी ने पहले ही बताया कि वो काम कर सकते हैं. तो वही काम आपको करना है. और साथ साथ हम नॉर्मली फाइन कर सकते हैं. एक टेल ट्विस्टर की ये प्रिविलेज होती है यदि कोई, आप तो लायंस लेपल पिन नहीं पहन के आए हैं. मैम आई हैव पेन रखा मैम. ओ तब ठीक है, तब ठीक है, डन. तो यदि आप लायंस लेपल पिन जो नहीं पहन के आया तो आप उनको फाइन कर सकते हैं. पर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. तो आप you can have different things. यदि कोई अपने आप को अनम्यूट कर देवे भूल से, उसको फाइन कर दीजिए. कोई कुछ वहां पे स्क्रीन है और स्क्रीन में नहीं है तो फाइन कर दीजिए. इट इज अप टू यू. आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन ये नया जमाना है, नई चीजें हैं. तो आप भी अपने फाइन्स को चेंज कर सकते हैं. और ये जो फाइन जितना भी आपको मिले वो नेचुरली यू विल हैव टू यूज इट फॉर क्लब सर्विस एक्टिविटीज. तो क्या आप 2020-21 में ये काम करेंगे? Ma'am, I will certainly do. But one thing I will like to share with you. Please do. आपने कहा कि जब मीटिंग का माहौल कभी टेंस हो जाए तो आपको उसको हार्मोनियस बनाना है. I have very simple trick. I have to make my members feel this Madam Sangeeta Jatia is in front of them physically. Because जब भी कोई मेंबर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा, naturally tension will nowhere there. So I have very simple trick. You're very kind. Thank you. Very kind of you. Very nice. Thank you so much. I am flattered. So let's move on. बस इसी तरह से लोगों को फ्लैटर करते रहिएगा. आप पहले गुस्सा ठंडा ही हो जाएगा. You're right. You did a fantastic job. So let's move on to the directors now. Ratan ji Khakolia, Shyam Sundar ji Agarwal, Surendra Chauraria, Vimla ji Jajodia, Manju Jain, Sushmita Goswami, Arvind Kejriwal, Pramod Harlalka, Vinod Jain, Aparna Agarwal, Prakash Kabra, Aruna Chhabra. You are the directors of the club. और जो काम होता है डायरेक्टर का तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे खास काम होता है डायरेक्टर का कि मीटिंग में आए और मीटिंग में चुपचाप नहीं बैठे. मीटिंग में अपनी राय दें. प्राय हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बोल रहा है चलते चलो. नहीं, ये नहीं कहते कि प्रेसिडेंट को काटिए, पर ये जरूर है कि प्रेसिडेंट के हाथ को और मजबूत करिए. जब हम आइडिया शेयर करते हैं ना तो प्रेसिडेंट का हाथ और मजबूत होगा, आपकी क्लब और अच्छे से चलेगी. क्योंकि जहां तर्क, विवाद, डिबेट, डिस्कशन होता है ना, वही प्रोग्राम सबसे अच्छा होता है. और वहां पे उसमें इट बिकम्स मोर, अपनापन लगता है उसमें. तो आपको यही काम करना है कि हर मीटिंग में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें पार्ट लेंगे, अपनी आइडियाज देंगे. अंदर में जितना भी हो जुद कर लीजिए. आपकी बात कोई नहीं सुने तो जोर से बोल लीजिए. आप वहां पे गुस्सा भी हो सकते हैं. एवरीथिंग इज फाइन. और जब मीटिंग से बाहर निकलेंगे ना तब एकजुट होकर निकलेंगे. दैट इज अ साइन of a good board of directors. So my dear directors, I know each one of you
What I've seen of some of you over here are just incredible. So I'm sure you'll do a great job of guiding your club, helping your club and taking it forward. ये काम आप करेंगे? Yes. Thank you. Thank you very much. We now move on to the club marketing communications chairperson line Neelam Mathur. Neelam ji, इन्होंने कहा कि आप बहुत इजी हैं, बहुत आराम से सबसे घुल मिल जाती हैं और आप बहुत आराम से सारे काम कर निकालेंगी। तो आपको यही काम करना है एज द कम्युनिकेशंस चेयरपर्सन, लोगों से बातचीत बनाए रखना। और इस समय में तो वो कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और भी हो गया है। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी हो गया है कि हम एक दूसरे से किस तरह से बार बार मिलते रहें, बार बार मीटिंग्स करते रहें। मीटिंग ही नहीं, फेलोशिप मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। और ये काम आपका रहेगा that you tell and you take your members together and you work with them to see that उनको ये अपनापन लगे, क्लब से जुड़े रहें, क्योंकि शायद यही सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा सर्विस टुवर्ड्स आवर मेंबर्स हमारा रहेगा। तो क्या 2020-21 में आप ये काम करेंगी नीलम जी? Yes. Thank you very much. Now I move on to the service chairperson. सुरेश जी, यदि आपकी सर्विस की प्लानिंग इवन 10% आपकी इंस्टॉलेशन की प्लानिंग जैसे हुई ना, तो काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया चल जाएगा। और यही करना है आपको, प्लान्ड वे में सर्विस करना है। सर्विस भी हमारी अलग तरीके की होगी और सर्विस में हमारे को सेफली करना है और हमारे को वो ही करना है जो हम बिना रिस्क के कर सके। मेरे को मालूम है वर्चुअल सर्विस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वर्चुअल सर्विस लिमिटेड भी हो जाता है और हमारे को केयरफुली काम करना है, पर नीड has not come down. The need has increased. The need for Lions has increased, I think, many fold, and people need our kindness much more. I think that is what we need to do, is give kindness, share kindness, और ये चीज आपको innovative and creative way से करना पड़ेगा as a service activities chairperson for your club. I know you do fantastic activities. I know you have some permanent projects, पर साथ साथ नए भी काम करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से हमारे मेंबर्स को हम उत्साहित रख सकेंगे। तो ये काम क्या आप करेंगे 2020-21 में सुरेश जी? एकदम करेंगे। Thank you very much. I now move on to the LCIF chairperson, Purushottam ji Gagar. Hello. What a beautiful report. Fantastic. That was really very nice. Thank you. That came from the heart, and like your president said, if he says he can do it, consider it done. आपको नाम भी दे दिया उन्होंने, consider it done. तो आपको हमने LCIF chairperson आपके क्लब ने एकदम सोच समझ के बनाया है। हमारे फाउंडेशन में, फाउंडेशन से खाली हमको मिलता ही नहीं, हमको फाउंडेशन में देना भी पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन चलता ही हमारे लायंस के कंट्रीब्यूशन से है। और छोटे छोटे डोनेशन यदि हमारे हर क्लब मेंबर देते हैं तो वो एक बड़ा चीज बन जाता है। और जब हम वो कंट्रीब्यूशन देते भी हैं, आजकल तो हमारी फाउंडेशन हमारे को ग्रांट के रूप में भी वो वापस भी देती है। तो आपको ये करना है कि हम अपने फाउंडेशन को कैसे सशक्त बनाएं। जैसे आपने क्लब को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, वैसे ही लग के आपको अपने फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो मिस्टर, consider it done. Yes. Are you ready? Yes, I am ready. Yes. Thank you are ready. Thank you so much. And if you are ready, I am sure the club will definitely make a good contribution to our foundation. We look forward to hearing more. Thank you so much. Thank you. We now move on to the membership chairperson, line Suresh Sabu. सुरेश जी हैं, इन्होंने कहा, हमें बताया गया कि आपकी बच्चों सी हरकत होती है, बहुत एनर्जी है आप में सुरेश जी, और आप जो भी काम करते हैं ना, वो बहुत करते हैं ना, दिल से करते हैं, और आप में बहुत जोश है। वही जोश आपको बनाए रखना है, क्योंकि आपके जोश से आप और लोगों को इन्वॉल्व करके अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपका काम है एज अ मेंबरशिप चेयरपर्सन लोगों को साथ लेके चलना और लोगों को हमारे साथ जोड़ना। तो नए लोगों हमारे साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, इतने तकलीफ में मत आइए, आप मेरे को सुनते रहिए, कोई खास बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, नए मेंबर्स को लेके आना है। आपको नए मेंबर्स को साथ में जोड़ना है, क्योंकि जब हमारे पास नए मेंबर्स आते हैं तभी हमारे पास और हाथ आते हैं और दिल धड़कने वाले आते हैं और साथ साथ और पॉकेट्स भी आते हैं, क्योंकि रुपए भी तो चाहिए ना हमारे को।
तो ये काम करना पड़ेगा. So are you ready, सुरेश जी? आप ये काम करेंगे 2020-21 में as the membership chairperson of this club. ये करेंगे आप? Yes. Thank you very much. I now move on to the club administrator. देखिए हमारे लायंस में कितनी विजनरी थिंकिंग थी. 2 साल पहले ये पोजीशन आया था अशोक जी. 2 साल पहले लायंस इंटरनेशनल ने एक पोजीशन बनाया था एडमिनिस्ट्रेटर का. उस समय हमें समझ में भी नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या हो सकता है. उस समय बताया गया एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होगा कि सारे रिपोर्ट्स को ऑनलाइन भर दिया जाए, जो हमारे टेक्निकली बार बार ये पासवर्ड चेंज नहीं करना पड़े, क्लब की जो टेक्निकल थिंग्स हैं उसको हाथ में रखें. और आज एक टेक्नोलॉजी मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी जरूरत पड़ गई है हमारे को हमारी क्लब की मीटिंग्स में, शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. राइट? आज यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, हमारे पास कोई होस्ट को होस्ट नहीं हो, तो हम मीटिंग चला ही नहीं सकेंगे. राइट? तो आपका यही ड्यूटी रहेगा. जिस तरह से आप वो ओम विलोम योगा कराते हैं, वैसे ही साथ साथ मिलकर आपको क्लब की मीटिंग्स को भी सुंदर तरीके से चलाना पड़ेगा और हमारी सारी रिपोर्ट्स को अपलोड करना पड़ेगा. क्योंकि आपके ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगे तो लायंस इंटरनेशनल को पता ही नहीं चलेगा कितना फैंटास्टिक काम कर रहा है गुवाहाटी ग्रेटर. तो ये काम क्या आप करेंगे? You will. Thank you very much. I now move on to the treasurers of the club, Lion Sunita Kejriwal and Lion Satish Mittal. Sunita ji, as a treasurer of the club, you are going to be having not only a control, आपके पास में वो सारे फंड्स भी हैं, सारे फंड्स भी लेने पड़ेंगे. और मेरे को मालूम है जितने सारे मेंबर्स आपके हैं, नेचुरली यहाँ पे फंड रेजिंग और जितनी अपनी एक्टिविटी कर रही रहे हैं, उतना फंड रेजिंग भी आपको करना पड़ेगा. और उतने आपके पास मेंबर्स आपको रुपए भी देंगे, रुपए तो देंगे ही, और साथ साथ आपका कलेक्शन भी होगा. आई हैव नो डाउट. आपको सुन नहीं रहा है सुनीता जी? नो प्रॉब्लम. मेरे को मालूम है, आपको मालूम है क्या करना है. आई थिंक शी इज हैविंग ट्रबल लिसनिंग. Never mind. Somebody will tell you, I'm sure, and I'm sure you already know about it, कि आपको रखना है पूरे क्लब का अकाउंट्स, लेखा जोखा रखना है आपको क्लब्स का. आपको हमारे क्या एसेट्स है, हमारी क्या लाइबिलिटीज है, हमारी क्या बैलेंस शीट है, हमारा ट्रायल बैलेंस, वो जो सारे अकाउंटिंग टर्म्स है ना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. खाली लगता ही बहुत बड़ा चीज है, बहुत ही सिंपल है. रुपए आए रुपए गए, इसका पूरा हिसाब रखना है. जैसे आप घर में रखते हो वैसे ही यहाँ पे भी रखना है, पर हिसाब देना जरूरी है. घर में तो शायद हम थोड़ी चोरी कर लेते हैं, वो रखते नहीं है, कभी कभी हिसाब प्रॉपर्ली रखते नहीं है, पर यहाँ पर हर पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा. और हमारे डोनर्स को, हमारे मेंबर्स को, हमारे को पूरे अकाउंट्स देने पड़ेंगे. तो क्या आप दोनों मिलकर, सतीश जी और सुनीता जी, काम करेंगे? थैंक यू वेरी मच. I now move on to the secretary and the joint secretary, Rupa ji Gaggad and Sudha Sharma ji. Rupa ji and Sudha Sharma ji. Personality traits जो आपके क्लब वालों ने हमें बताई आपके बारे में, you are an ideal choice for a secretary and a joint secretary. Both of you together are capable of making that difference. Secretaries are generally the live wire of the club. Secretary यदि vibrant होना, क्लब अपने आप चल जाती है, किसी को और कुछ करना ही नहीं पड़ता है. अब secretary is the most important person in any. I think there's an echo. किसी का on है, इसलिए echo आ रहा है. So you've got to be very careful that you are always energized, motivated. जितना आप motivated रहोगे ना, उतना ही motivated आपके club members रहेंगे. जितनी तेजी से आप चलोगे, आपकी क्लब भी उतने ही तेजी से चलेगी. So do you promise in the year 2021 you will be there with your president, with your treasurer, with all your members, because you are definitely going to be the most important players in this, what we call the scene of Lions of Guwahati Greater. So ये काम आप क्या करेंगे? Yes? Thank you very much. We now move on to the vice presidents. First vice president Jyoti Agarwal, second vice president Bela ji, and third vice president Dr. Kavita Gaggad. Vice presidents are those who are kind of the support
They are the support of the president. The president can always call upon you. The president can always call upon you for anything. Your president can always ask you to lead any committee, any program, any project. वो आपको कभी भी कोई भी टाइम पे बुला सकते हैं. बेला जी, आपने दिखाया इतने सुंदर से छोटी सी बात को आपने इतनी बड़ी बना दी. इतने मेरे बारे में चीज ही नहीं थी. बस खाली एक चीज गलत बोला आपने, वो साड़ी का पल्ला नहीं है. बाकी सब कुछ ठीक ही बोला. पर everything else, but you will have to be available, all three of you, at the beck and call of your club president whenever she wants you. So will you, as the true compatriots of your club president, at her call, be ready to take up any responsibility that she might ask you to take up? Can I have your consent that yes, you will? Yes, all I the will. vice presidents. Yes, I will. Thank you. Thank you very much. Now I come to the immediate past president, Lion Sanjay Chhabra. Sanjay ji, you had a glorious year. Fantastic work you have done. But your challenge is before you now. The most important year for you is going to be the year 2021. If 2021 is not better than 1920, then you are not a successful president. So you've got to work even harder than you worked last year. So you've got to give it your 100%. इस साल भी देना पड़ेगा. शायद बहुत ज़्यादा difficult है. देखिए, वो driver seat में बैठ के गाड़ी चलाना बहुत simple है, पर किसी के साथ में बैठ के उसको guide करना, उसको बताना बहुत difficult काम होता है. क्योंकि कभी-कभी वो driver बोलता है चुप रहो ना, मेरे को सुनना नहीं है. Driver समझते हैं हम खुद ही चले जाएंगे, पर आपको मालूम है कि आपको बताना है, because you can see an impending desire. आपके पास past governors भी हैं, आपके यहाँ senior lions हैं. जब इतनी lions, तो naturally you've had such a wonderful year, तो naturally कई चीजें तो आपने सीख ही गई हैं जो आपको करना पड़ेगा इस साल. जो आपने सीखा है, देखा है कैसे lions को handle करना, और बहुत beautifully आपने handle किया. That is very very evident. तो वो सारे tricks आपको आपके president को समझाना पड़ेगा. इसलिए समझाना, पर चुपचाप समझाना. जब वो बोले तभी बोलना बहुत difficult होता है. और खासकर जब हम कुर्सी बहुत enjoy करते हैं ना, तो ये कुर्सी छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है. But I know you will do a great job, and you will be a good immediate past president. So I have your assurance that you will work with your president, but guide her, mentor her, and be at her side. Will you do that? Yes, sure. Thank you. Thank you very much. And now I move on to the president of the club, Neeru ji. Are you excited? Yeah. Nervous? Nervous है? हाथ दिखाइए, shake कर रहे हैं क्या? नहीं ना? नहीं कर रहे हैं ना? Good. So you're excited. Naturally, you should be excited. It's an exciting job. To be a club president is something which is, I think, the most fulfilling job that is in this organization. या तो international president बनो या club president ही बनो. बीच में हमारे कुछ नहीं होता. तो आप club के president बनने जा रहे हैं, बन गए हैं rather. आज आप उसका बागडोर संभाल रहे हैं. And you have the tradition of a fantastic club. See, खाली वही नहीं. You are also going to be setting a trend in your club. You've got to do things which are totally different. Naturally, people expect creativity and innovation when a fantastic team like yours comes together. So you will have to live up to the standards of those demands that people are going to have of you. Your district, your members of your club will definitely look for something totally different from you. So are you ready, Neeruji, to take up and deliver that? Yes. If you are ready, may I request the immediate past president, Chhabra ji, to please hand over the symbol of authority, virtually of course, to your president. I can do it actually physically. I am sitting in a different room. I'll just go across and hand it over to her. Wow, that's fantastic. I thought complete lockdown hai Guwahati mein. So, okay, so let's see. This is beautiful. Let's see if we can do this. And here we are going to be witnessing the handing over of authority, the passing of the baton from one to the other, from the outgoing president to the incoming president. Wow, how beautiful is that? And thank you so much for accepting the responsibility and for you for giving up that authority. And now I have great pleasure declaring the entire board of Guwahati Greater This is the duly president's installed. pin. It is a tradition to pass the president's pin.
So I'll pass this president's pin to her. Fantastic. Please accept the president's pin, and it's so nice that we see it being given so gracefully from one president to the other. I wish you all success, and I wish you all the best, Neeruji, and I'm sure under your leadership, Guwahati Greater is going to have a tremendous year. Wish you all success, wish you all the best, and most importantly, thank you for having me here. I've thoroughly enjoyed being part of this glorious ceremony. Thank you. Thank you very much. थैंक यू वेरी वेरी मच लायन जतिया. निहाल हो गए आपको सुन के. क्या बताऊं मैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट हाउ टू रिस्पोंड. आपके स्पीच पर मैं क्या कहूं, क्या दूं प्रतिक्रिया. आपको सुनकर हम निहाल हो गए लायन संगीता जतिया. It has been so nice. खास करके 2-3 चीजों ने तो मुझे बहुत अच्छा लगा. You said you'd like to be a part of our club. That is the biggest appreciation you can give to us. Thank you so much. और मैम एक चीज और आपने बोला कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लायन, लेडी लायन और अ मेल लायन. और शायद आपने ये कहना चाहा कि लेडी लायंस कहीं कम नहीं है, पर मैं बोलूं मैम हमारे क्लब में कुछ उल्टा ही है. एक्चुअली हम बेटर ऑफ सुन के इतना पक गए हैं कि हमें लगता है कि जो करना है सब लेडीज ही करेंगी, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है. तो एटलीस्ट कम से कम आज आपने बता दिया कि नहीं, यू हैव टू बी बट अ ह्यूमन बीइंग. तो आज जाके मैं अपनी वाइफ को कह पाऊंगा कि देखो जतिया जी ने बोला है अच्छा इंसान होना काफी है, तो आप मुझे इतने दबाने की कोशिश मत करो. सो नाइस ऑफ यू मैम. दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नए प्रेसिडेंट को वेलकम करने के पहले हम हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट को कुछ घूस देना चाहते हैं कि उन्होंने पिछला टर्म इतना अच्छा किया कि अगले टर्म में भी वो पूरा हमें सपोर्ट करते रहे. इसके लिए हम थोड़ी उन्हें ब्राइब देना चाहते हैं. नेहा और धीरज, कैन वी हैव दैट ब्राइब प्लीज, जो हमने हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए चूज की है हमारे सारे क्लब मेंबर्स की तरफ से. And this is the bribe, Mr. Cool Award. He has always been so cool amongst all opposites and discrepancies and problems that we present this Mr. Cool Award to our outgoing president, Lion Sanjay Chabra, and expect that he will be as active in the coming years also. Thank you members, thank you very much. बता दूं हमारे IPDG लाइन सुधीर चौधरी भी यहाँ हैं, उनका भी हमारे क्लब के साथ बहुत सपोर्ट रहा है. He has set very new trends also and he has been very supportive to our club. Maybe proceed further. Okay, क्या प्यारी लग रही नई टीम, एकदम सामने एक तरह के कपड़े पहने हुए. प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारी दुनिया को विमेन ही लीड करती आई हैं. हमने ये भी सुना है कि कोरोना भी उन देशों में कम है जहां विमेन लीडर्स हैं और उन देशों में ज्यादा है जहां मेन लीडर्स हैं. तो आशा है आप हमारे क्लब को भी इतनी अच्छी तरह लीड करेंगे. दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उसके पहले हमारे नए प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं. शी इज अ स्पोर्ट्स वुमेन, शी वाज एन एथलीट अर्लियर, तो शी नोज द वैल्यू ऑफ टीम वर्क. और न सिर्फ वो खुद एक स्पोर्ट्स वुमेन है, उन्होंने अपने बच्चों को भी यही तामील दी है. Her son Siddhant is a very good equestrian. In fact, he is in the national team. And her daughter Siddhi, जिन्होंने ये आज का invocation पूरा बनाया था, she is a swimmer. May I request our new president, Lion Neeru Kabra, to please present her acceptance speech. Before Neeruji starts, can I please just apologize? हमारी district की cabinet installation है, so would you mind if I leave? We're going to just start in another 5 minutes over there. Ma'am, this is not done. This is not done. आज तो मैं आपके टाइम पर हमारा अधिकार है. इनफैक्ट आने दिनों में एक प्रोजेक्ट भी होने वाला है. हमारे लाइन प्रमोद हरलाल का ने बताया कि उसमें भी आपको देना पड़ेगा. I will keep it on, even that's virtual, so I'll keep it on. But I honestly will even put that on also. Okay. बस मैम आपका चार्मिंग चेहरा हमें दिखता रहे. That will be sufficient for us. Okay. All right. I'm sorry about that, but it's a district cabinet installation today. Just want to get it started. Okay. We understand, ma'am, that you are very busy also, but still ठीक है, अगर आप हमें भी थोड़ा बहुत टाइम दे देंगी या थोड़ा व्यू दे देंगी तो it will be very nice for us. Okay, may I request the president to proceed? Thank you, Arvind Kejriwal. Honorable Chief Guest, DG Line Rajkumar Inghania, Installation Officer Line Sangeeta Jatia, Galaxy of PIDs, Cabinet members, guests, friends, visiting Lions, and my fellow Lion members. I warmly welcome you to the epic installation ceremony. Epic since first time in the history of our club, all the 3 prime chairs are being occupied by Lady Lions.
I want you to know that your joining today is not by circumstance, but divinely orchestrated by the Almighty God. I need to first thank the Almighty for making me one of His creations. My parents, my mom, dad, without whom I am no one and nowhere. My family for extending their support, and my better half for being my catalyst. A lion is just not a face in the crowd. It's a convocation of like-minded people who bring hope to the required community with their time, resource, and intellect. In accepting the mantle of leadership today, I share a mixed feeling, being the first lady president of our esteemed club. And I finally find myself in the driving seat. Till today, I was the follower of rules, but now I will be giving the ones. Elated, yet a bit apprehensive, I'm not mindful of the enormous responsibility that comes. I wish to work on certain terms that will lay down a strong long-term foundation for our club in the field of employment generation, environment, education, health, keeping in view the tough times. There is no illusion about the fact that we need to restructure ourselves in the tough pandemic situation. We need to reinvent, to rebuild, reconnect, and sustain this good model and consistently take it a notch further. Must mention that our club is built on a strong leadership foundation where 3 highly active generations are working together. Club of 80s, Club of 60s, and Club of 40s. Our founding members are our source of inspiration who set a precedence for a fine blend of excellence and commitment to the service. I thank and congratulate my board members whose continuous support, enthusiasm, and commitment will be our goal achiever. The best job in Lionism is immediate past president. I hope Sanjay Bhai is hearing this, but the same sweet music won't be for Lion Sanjay Chhabra. My continuous nagging, followed by your strong, meaningful support, will always be a welcome note. Today, I must mention that I do feel very sorry, and I feel the void and absence of our own PDG, late Saraugi uncle, who would have been overwhelmed to see the Lion days occupied by the Lion ladies. Uncle, keep showering your blessings on us. Making a difference is inconvertible. Showing kindness is the most powerful source of happiness, and the corporate existence is indivisible. Teamwork is less me and movie. Seeking full cooperation from Lions fraternity and my fellow Lions, I thank you all once again for joining us today. Thank you very much. Thank you very much, President. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. हमारा सारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा. नॉर्मली जब कोई मेल प्रेसिडेंट बनता है तो हम उनकी वाइफ को बुलाते हैं कि भी आपको तो सपोर्ट देना बहुत जरूरी है. आज एक लेडी प्रेसिडेंट बनी है तो हम उनके हस्बैंड को बुलाना चाहेंगे कि वो साथ में आए और अपनी वाइफ के साथ बैठे, क्योंकि 1 साल तक उनको बहुत सपोर्ट देना है. कभी आपको टाइम पे चाय नहीं भी मिले तो घबराइएगा मत, बिकॉज सारा सपोर्ट आपको अपनी वाइफ को देना है. प्रकाश काबरा, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लब के बहुत ही डैशिंग और एकदम डायनामिक मेंबर हैं. बहुत अच्छे डांसर हैं, डांडिया वांडिया में खास अपना रस जमाते हैं ये. और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कपल्स यू कैन सी, प्रकाश एंड नीरू काबरा. लेट्स गिव अ बिग थम्स अप फॉर देम. ओके, प्रकाश जी, नीरू जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको इस ग्रेट क्लब की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए. अंतिमा लोढ़ा, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम, दैट्स वेरी नाइस. और आशा है आपका टर्म भी संजय छाबड़ा के टर्म से और अच्छा जाएगा. संजय जी, if you'll pardon me for saying so. Friends, we proceed further. We have Lion Rajkumar Ringania DG with us. May I request him to say a few words. Lion Rajkumar Ringania. Thank you. President Neeruji Kabra, PID our Madam Sangeeta ji,
who left the meeting as he has to attend some important meeting. Definitely, I should recognize. I am still here, राजकुमार जी. Yeah, madam. सुन रही हूँ मैं आपको. अरे बहुत अच्छा मैडम. Thank you दीदी. And PID, our Prem uncle. Firstly, I congratulate and I welcome Prem uncle on behalf of all the District 322G to the great meeting of Lions Club of Guwahati Greater. Sir, always pleasure to see you, sir. And our galaxy of past district governors, VDG 1, Lion Shubhankar Sen, VDG 2, Lion DS Rathod, and IPDG, Lion Sudhir Chaudhary. Friends, I would like to start with the blessings of God on the land of Ma Kamakhya, praying for mental and health strength for all. Friends, as you all knowing it well, that sky is our limit of services to mankind. We have huge responsibilities, friends. We have huge responsibilities. And we have within all the capabilities to achieve. It's our duty that we do it, yeah. Gracious presence of our leader, PID Madam Sangeeta Didi, on the auspicious day, the great charter celebration and the installation ceremony of Lions Club of Guwahati Greater is itself a proud moment for all of us. We always need her guidance and expertise in all our endeavors. Madam, always your presence, आपकी उपस्थिति ही हमारा हौसला बुलंद कर देती है. और मैं आज आपने जो इंस्टॉलेशन में लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी ग्रेटर आपको बताना नहीं पड़ेगा, इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट. एंड आपने देखा है किस अंदाज में. एंड डेफिनेटली आई कॉन्ग्रेचुलेट immediate past president Lion Sanjay Ji Chhabra. What a way you have the award you have given, the way. That is fantastic, friends. That is fantastic. Congratulations, Sanjay Ji Chhabra, for the wonderful services you have done in your tenure. And in 2021, definitely I will say about Neeru Bhabi. Neeru Bhabi, under your able leadership, Lions Club of Guwahati Greater will achieve more and more greater heights. And definitely in district also, you will achieve greater heights in time to come. We have lots of, आपसे बहुत उम्मीदें हैं भाभी. आप इस 2020 और 21 के साल में आप कभी, मैं आपको पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ आपको कि नीरू भाभी और रूपा जी गग्गड़, मैंने इनको पर्सनली सामाजिक संस्थाओं के अंदर में देखा है और इनके काम करने की क्षमता, इनके काम करने का अंदाज. ये 2020 और 21 का साल मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी ग्रेटर में आप सब मेरे आज के इस दिन को याद करना. ये साल कुछ अलग सर्विस हो, लीडरशिप हो, मेंबरशिप हो, अपनी एक छाप छोड़ के रहेगा. डेफिनेटली I on behalf of District 322G promise you, madam, whenever if you require, I am always available. I am 24/7. I always available for Lions Club of Guwahati Greater. And one thing I want to share, this is the information that I want to share, that this year district schooling New Horizon organized over a period of 4 days between 20th July to 23rd July 2020. District schooling inauguration session is on 20 July, that is tomorrow, from 5 p.m. My humble request to you all club members, as it's a tremendous opportunity to hear our leaders who are very proud of our nation in Lionism. PID Narendra Bhandari sir, our PID AP Singh sir, and our PID Sangeeta Didi, Sangeeta madam, and our PID GS Ora. From for tomorrow, I invite all of you. This is that मैं आज की इस मीटिंग के अंदर और क्लबों से भी हमारे आए पदाधिकारी, लीडर सब बैठे हुए हैं. मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सब से कि कल 5 बजे वो अपने सारे क्लब के लाइन मेंबर के साथ हमारे इस इनॉग्रेशन सेशन को ज्वाइन करें और अपने सारे मेंबरों को अपने ग्रुप में ये मैसेज भेज दें. ऑलरेडी यू हैव रिसीव्ड द मैसेज, आई सपोज,
that we have given all the information regarding schooling programs. Our cabinet secretary and our cabinet secretary line Rishabh Loda and our GLT leader line Mandira Madam is working very hard 24/7. They are doing wonderful. They are doing wonderful for the district schooling. So my request to you all to please join tomorrow and with your club all line friends. And my special request to the past district governor present in the meeting to please, sir, join the meeting tomorrow, and all president, secretary, treasurer, zone chairperson, region chairperson, all cabinet members, that from 21st, a number of eminent speakers and faculties from all over the country shall take power packed session for you every day. So all you are invited to join tomorrow program. With this, once again, my best wishes with the Lions Club of Guwahati Greater, and all the best. Win the heart, friends, win the heart. Thank you very much. Friends, we have with us our outgoing district governor, Lion Sudhir Chaudhary. He has many firsts to his credit. He was the first one to introduce e-directory. He was the first one to stop felicitations in our meetings and save time. Sudhir ji, may I request one thing I want to share with you, the friends. One thing I want to share, Arvind ji, I want to share. Go ahead. This year we have decided that सम्मान करना, सम्मान लेना और देना हमारी प्रथा है. तो मैं चाहूंगा लायंस क्लब के अंदर में हमारे 2020-21 में वो किस तरह से सम्मान होता है, किस तरह से रिकॉग्नाइजेशन का प्रोग्राम होगा, ये डिपेंड करता है क्लब के ऊपर. लेकिन हम ये सम्मान का अपना जो किसी अतिथि को, हमारे चाहे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, चाहे हमारे कोई लीडर्स हो क्लब के, या हमारे कैबिनेट लीडर्स हो, या हमारे आने वाले गेस्ट हो, हम चाहेंगे ये हम सम्मान करने की प्रथा 2020-21 में हम इसको जारी रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. Lion Sudhir Chaudhary, may I please request you to have the spotlight on you and speak a few words. Yeah, Lion Sudhir Chaudhary. Thank you, MOC. Just installed President Lion Neeruji Kabra, outgoing President Lion Sanjay Chhabra, Chief guest of today's evening, District Governor Lion Rajkumar Ringania, today's installation officer, past international director, Lion Sangeeta Jatia ji. Sanjay ji, आपके लिए क्या कहूँ? Every district governor is fortunate to have a president like you in one of the great clubs, Lions Club of Guwahati Greater. You have done wonders in your club. You have participated in every activity of the district. You have supported your governor like anything. You were fantastic. नीरू जी, रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए. रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए, मगर उसकी कोशिश करते रहना है. संजय जी ने उम्दा काम किए हैं अपने साल में. नीरू जी, आपको उनसे भी बेहतर करना है. So with these words, I congratulate Neeru ji, and I wish your tenure should be more successful than Sanjay ji, because we should improve every day, every time. With these words, I thank you all for inviting me. Thank you. ये सुधीर जी की खासियत है, वो शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं और बहुत इफेक्टिव बोलते हैं. थैंक यू वेरी मच Lion Sudhir. We have had a fantastic Lionistic session under your leadership. Okay, we have Shubhankar Sen with us, Lion Shubhankar Sen, first VDG, who will have his term for 2021-2022. Shubhankar ji, we request you to say a few words. Good evening, Lions. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Okay, thank you. President of Lions Club of Guwahati Greater, Lion Neeru Kabra, immediate first President, Lion Sanjay Chhabra, past international director, today's installation officer, Lion Sangeeta Jatia Madam. Another past international director is with us today, Lion Prem Lahoti ji. Our district governor, chief guest of today's program, immediate past district governor, vice district governor too, and collective of past district governors and other dignitaries sitting here in this virtual meeting. I have seen the participant list
It was 114. Now I don't know how many people are here, but it was a record. 90. It's a record. Now it is 90. Very good. Because I attended your club is the fifth club to install the new board of directors in virtual mode. I'm telling on record. First one is Lions Club of Guwahati, then Lions Club of Silchar Vision, then Lions Club of Karimganj, Lions Club of Silchar Lioness, today itself, and your one is the fifth. And Lions Club of Guwahati, it was around 80 or 90 people, and your is the highest in terms of attendance. That shows that how meticulously you plan and how popular you are. And as I observed, many members from Tripura itself, Tripura and Warrackville area also join in this today's virtual meeting. Today morning, I have installed one club, that is Lions Club of Silchar Lioness, is a Ready Lions Club. And today I am attending a club installation where past president, secretary, treasurer, all are ladies. So I am fortunate enough to install a Ready Lions Club today and to attend a program where all three ladies are coming up with the leadership. Lions Club of Guwahati Greater, I know this club from last 20 years. I have got very good relation with many of our friends of Lions Club of Guwahati Greater. And this club is always meticulous, always systematic and service oriented. I wish Lion Neeru Kabra, president of this club, all the success, and I wish full team under the leadership of Neeru Kabra for 2020-21. Whatever position given by Lion Sanjay Chabra ji, I am very much confident that Neeru Kabra, madam, will take it much more better height, and we are with you. Our full team will be with you to support you in your all future endeavors. With this word, I once again congratulate and your best wishes for the coming Lion District. Thank you. Long live Lion. Thank you, Lion Shubhankar Singh, for your words. हमारे साथ श्री BS राठौड़ भी हैं, लाइन BS राठौड़. वो उनके नाम में एक बहुत दम है. मैं चाहूंगा कि वे भी कुछ कहें. Line BS राठौड़, VDG2. Are you here, Line Rathod? Yeah, I'm here. Okay. Am I audible? Yes, very much. शुरुआत करते हैं. आज के जस्ट इंस्टॉल हमारी प्रेसिडेंट नीरू काबरा जी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट संजय जी, जो बहुत ही करीब है हमारे, और आज के इंस्टॉलेशन ऑफिसर जिनके बारे में क्या कहूँ, जिनकी बात ही कुछ अलग निराली है, संगीता जाठिया जी, और साथ में बैठे उनके गुरुजन, उनके पिताजी, उनको मैं प्रणाम करता हूं. और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, खास करके मैं आज हरलालका जी का नाम लेना चाहूंगा. जब मैं प्रेसिडेंट था तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, और जितने भी हम आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और सारे डिग्निटरीज जो प्रेजेंट है, सभी को मैं एक बार नमस्कार करके मैं अपनी बात रखता हूं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है. ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. पूछना हो तो संगीता जी से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है. तो दोस्तों, मैंने देखा है ये सलीका हमारे अरविंद भाई के पास भी है, और जिस तरह से वो हर मीटिंग को इतने कायदे और इतनी खूबसूरती से वो रोचक बनाते हैं कि सुनने का दिल हमेशा करते रहता है. मैं इस क्लब के बारे में क्या कहूं दोस्तों, मैंने एक चीज देखा इस क्लब में. इस क्लब ने एक चीज जो सार्थक जो है ना, वी केयर, वी सर्व, वी अकम्प्लिश, ये जो मंत्र है इनके साथ पूरा जुड़ा हुआ है. और खास करके टाइम मैनेजमेंट, तो ये हमारे दिशा निर्देश देते हैं हमारे सभी क्लब को कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, लायंस क्लब गुवाहाटी ग्रेटर से सीखना चाहिए. दोस्तों, ये क्लब सिर्फ ग्रेटर नाम से नहीं है, किंतु अपने काम से भी है. मैं इस क्लब के बहुत सारे जो मेंबर हैं मेरे दिल के बहुत अजीज और करीब हैं,
और खास करके जो पास्ट इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में ये कह सकता हूं, आपने क्षितिज को देखा होगा जहां आसमान और धरती ऐसा लगता है जैसे मिलन हो रहा है, और इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है एक क्षितिज के समान है जिसमें आकाश और धरती दोनों समावेश है, यानी कि इन्हें उड़ने की भी आकाश को परिंदे की तरह इन्हें आदत है और धरती पे पकड़े रहने की भी अपनी बखूबी जानते हैं। दोस्तों, इस क्लब की खासियत में एक एक मैं बात बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस क्लब में कुछ तो बात है जिससे हमारे जो मित्र हैं, दो चार जो इनके बारे में मैं नहीं कहूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। हमारे जैसे क्लब में इसमें हमारे सुरेश साबू जी हैं, के हमारे जैन साहब हैं, सुरेश गग्गर साहब हैं, हमारे वो प्रमोद जी हैं, हरलालका जी हैं और अशोक जी हैं। मैं शायद किसी को भूल रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये इनके साथ जब मैं भी बात करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल की बात कहता हूं तो ये दिल से समझ जाते हैं, ज्यादा बोलने की, क्योंकि जो सच्ची बात होती है ना, ज्यादा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्लब के जो जाने वाले प्रेसिडेंट हैं उनके अच्छे कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूं और नीरू काबरा जी को एक चैलेंज करता हूं कि आज नारी शक्ति का प्रदर्शन का समय है। नारी शक्ति में वो ताकत होती है जो विध्वंस की देवी होती है और उत्थान की भी देवी होती है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी कमियां हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द हमारी कमजोरियां हैं, उनका विध्वंस करिए और उत्थान करिए हमारे लायनिज्म का, कि हमारे लायनिज्म में एक नया चेहरा, एक नया इमेज, एक नई सुंदरता उभर कर आए और हमने दिल से पूछे कि लायनिज्म में क्या जरूरी है, लायनिज्म के इमेज को बढ़ाने में हमें क्या चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी को विशेष धन्यवाद दूंगा और लायंस क्लब ग्रेटर को यही कहूंगा, प्लीज कीप इट अप। आपके अंदर वो क्षमता है जो आप दिशा दिखा सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को, ये बनाए रखिए। आप सभी को एक बार मैं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया राठौड़ साहब। सबसे पहले तो मेरे पर्सनल बिहाफ पे शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा बोला, और सेकेंडली आपने हमेशा एक पोएट, एक कवि दिखाया, तो साल 22-23 लगता है बहुत काव्यमय जाएगा हमारा, हमें इंतजार रहेगा आपके साल का। दोस्तों, हमारे साथ और भी डिग्नेटरीज हैं, अगर वे कुछ बोलना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। MP अग्रवाल जी। MP अग्रवाल जी बोलना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी बोलना चाहें कृपया चैट में लिख दें ताकि मैं स्पॉटलाइट आप पे डाल सकूं। स्पॉट स्क्रीन वर्चुअल में बोलते हैं कि स्पॉट स्क्रीन आप पे डाल सकूं। MP अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट है कि वे कुछ कहें। लाइन MP अग्रवाल, MPCC। Thank you, MOC. I'm audible. Yes, very much. Thank you. President Neeruji Kabra, immediate past President Sanjay Ji Chhabra, District Governor Rajkumar Ji Rangania. I think Sangeeta Ji is left. PID Sangeeta Ji, my dear land friends. At the outset, I congratulate Sanjay Ji Chhabra for having a wonderful year. He done a lot of activities, and that was his secretary's report shows that how much activities done last year. At the same time, I congratulate Neeruji Kabra and our team. I wish all the success of Neeruji Kabra, and definitely I used to tell from the very one day that ladies can do better, and definitely all the three office bearers of this club this year are ladies, and definitely they will do the best. My dear friends, this year I just speak 2-3 words only. This our governor has given me a very big responsibility of LCIF coordinator, and I do hope that this club will come forward and support for the LCIF funding. As Sangeeta ji just told here, that we give fund to the LCIF and we get back from the LCIF also. But what I know, we get more than what we give the LCIF. Today morning only, for a small club of Silchar, we got 3 MJF. And accordingly, I request the leadership of this club, please say how best we can support our governor, how best we can support our LCIF for the best interest of Lainism. Regarding membership also, since I am from multiple coordinator of GMT, definitely last year was a very, very
bad year for all of us. We have lost 68,000 plus members in the Lions Club International and 4,500 plus members in our multiple. Definitely a big responsibility this year. We do hope that we'll get the full support from the leaders present here. I could see many of the leaders of different parts of our district are present here today. My ask to them, as a GMT coordinator multiple, please see that we should do our best to give more members. With these words, once again, I congratulate Neeraj Kabra and our team. All the best. Thank you. थैंक यू वेरी मच लायन एमपी अग्रवाल। उन हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के एम्बेसडर ऑफ गुडविल अवार्ड रिसिपिएंट एमपी अग्रवाल की मिसेज लाइन राधा, पीडीजी लाइन राधा अग्रवाल कुछ बोलना चाहती हैं। लाइन राधा अग्रवाल प्लीज। राधा भाभी, हम वेट कर रहे हैं आपका। राधा भाभी, आर यू देयर? ओह, Yes. थैंक यू। Thank you, Bia. Just installed President Neeraj Kabra and immediate past President Lion Chhabra ji, respected District Governor and my dear friends. MP अग्रवाला भी है। MP नहीं, जैसा अमल अग्रवाला। पढ़न कुछ कहा आपने मुझे? हेलो, हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, आज नीरू जी प्रेसिडेंट बनी है, बहुत ही खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट का पोस्ट तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑफिशियली आज इस पोस्ट की हकदार बनी है। और जैसा कि इन्होंने अपनी एक्टिविटीज पहले से ही स्टार्ट कर दी है और मुझे पता है इनकी एक्टिविटीज के बारे में, वो काफी अच्छा करेगी। और जैसा कि मैं इस बार डिस्ट्रिक्ट के जीएम की कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन आज ये बातें मैं नहीं करूंगी कुछ भी, अपने आगे बहुत से मौके हैं। आज मैं उन्हें बधाइयाँ दे रही हूँ, आउटगोइंग प्रेसिडेंट को और इनकमिंग प्रेसिडेंट दोनों को ही। छाबरा जी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसा भी मेरे आगे लीडर लोग कह गए हैं कि रिकॉर्ड होती है तोड़ने के लिए, तो मैं यही चाहूंगी छाबरा जी अपनी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और खुद ही कोशिश करके नीरू जी को आगे लाए और उनके रिकॉर्ड बनाने में उनकी हेल्प करें। जैसा कि एज ए लेडी में कितनी कैपेबिलिटी होती है ये सभी जानते हैं, तो मैं इसी के आशा रखती हूँ कि ये नीरू जी बहुत अच्छा कार्य करेगी और अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का भरपूर सहयोग देगी, ताकि अपनी डिस्ट्रिक्ट को हम और आगे ले जा सके। अपने मल्टीपल में जो भी शॉर्टकमिंग अभी है और हमसे जो उम्मीदें वो लोग रखते हैं, उस उम्मीद पर हम लोग खरे उतरे, इसकी कोशिश हमें सब मिलकर करनी होगी। ज्यादा न बोलते हुए इसी के साथ मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों ही टीमों को देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राधा भाभी। मैं बता दूं मेंबर्स को कि राधा भाभी के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के समय मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज था, तो उनकी एफिशिएंसी को बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिला था उसके पहले 15 दिन तैयारियों में। एंड शी इज वेरी एफिशिएंट, वेरी केपेबल लीडर। थैंक यू वेरी मच। वी हैव विद अस, थैंक यू भाभी, वी हैव विद अस लायन डॉक्टर एमएल अग्रवाला पीडीजी। मुरारी भैया, आप हैं यहाँ? हाँ, एम आई हम आपको ऑडिबल? सुनना चाहेंगे। Line President Neeru Kabra, immediate past President Sanjay Chhabra, Chief Guest District Governor Lion Rajkumar Ji Ringania, Installation Officer PID Sangeeta Ji Jatia, and my dear friends, I congratulate outgoing President Sanjay Ji for a wonderful work he has done, and I extend my best wishes to the new team under the leadership of Lion Neeru Kabra. I have observed Lion Neeru Kabra during the years. She takes active participation in all the club activities, and I am sure she is a right choice and she will take your club to a greater height. Lions Club of Guwahati is known for strict scrutiny to appoint club presidents. Each president every year in their term, they are doing exceedingly well in last so many years. And I hope Neeru ji will keep this tradition. My best wishes for her. आज पीआईडी संगीता जेटिया जी ने मेरे दिल की बात कही। हर बार मैं सुनता था यही ऑल लेडी, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारे यहाँ कुछ दिल के अंदर कुछ तो डिफरेंस है कि हम क्यों सोचते हैं कि ऑल लेडीज या ऑल ये, तो लेडीज आर इक्वल टू अस।
and we want they should come forward, and so it should be a good team. So I will say that today is a good team and it will do a very wonderful work. ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लेट हो गई है. एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, ड्यूरिंग माई लाइनिस्टिक ईयर आपके क्लब के लायन सुरेश साबू, उनको इंटरनेशनल से एक्सीलेंस अवार्ड मिला है ये, और ये मैं सोचा था कि किसी अपॉर्चुनेट मोमेंट में उनको प्रेजेंट करूं, किंतु कोविड की वजह से इन पर्सन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं. मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजकुमार जी रिंगानिया जी से कहूंगा कि ये अवार्ड है उनको दिया हुआ घोषित करें, ताकि मैं उनको कभी ये उनके घर पे भिजवा सकूं. लायन सुरेश जी साबू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच लायन डॉक्टर ML अग्रवाल. दोस्तों, हमारे साथ एक शिलोंग से पीडी जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मेरा लियो क्लब के टाइम से जुड़ाव है. मैं रिक्वेस्ट लायन डॉक्टर के झुंझुनवाला टू प्लीज एड्रेस द वर्चुअल मीटिंग. लायन के झुंझुनवाला, we are waiting to have the spotlight on you. Are you there? सुरेश जी गगड़, लाइन के झुंझुनवाला, आप कृपया बोलें, so we can see where you are. Or has he left? I think he might have left. He might have left. Yeah, he was Okay. there a few minutes back. Okay. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमने एजेंडा में 135 मिनट्स का टाइम रखा था, दैट इज 6:15 पे खत्म होने का था, और अभी 6:12 हुआ है. 3 मिनट हमारे पास हैं, और इन 3 मिनट में अगर कोई बोलना चाहे तो इज मोस्ट वेलकम. अदरवाइज आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सेक्रेटरी लायन रूपा गगड़ फॉर वोट ऑफ थैंक्स. एनीबॉडी वुड लाइक टू स्पीक? सुरेश जी गगड़, आप मुझे चैट में बता सकते हैं अगर कुछ कोई बोलना चाहे हमारे डिग्निटरीज. ओके, आई इनवाइट लाइन रूपा भाभी, लाइन रूपा गगड़. मैं आपको बता दूं कि ये मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज दोनों में ही बहुत एक्टिव है, और इनके एक्सपीरियंस का मौका हमें लाइन्स को भी मिलने वाला है. लाइन सुरेश गगड़ टू मी प्रेरणा अग्रवाल. प्रेरणा यूर देयर? प्रेरणा, कल हमने आपका स्टोरी सेशन सुना था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अभी सुरेश जी गगड़ ने बताया कि प्रेरणा अग्रवाल यहाँ है. प्रेरणा जी, आर यू देयर? If you can start speaking, we'll spot you. Suresh ji, she doesn't seem to be here. Okay. Program chairman, can I invite Rupa Bhabhi for vote of thanks? Yes. Okay. Rupa Bhabhi, can we have the vote of thanks, please? Good evening, friends. Good evening to all my fellow lions and esteemed guests. Every new beginning is a bundle of new hopes, new dreams, new promises, and new inspirations. The most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart, and thank you is one of them. Friends, today my heart is filled with gratitude and gratefulness. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे डीजी लायन राजकुमार जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा हौसला बढ़ाया. मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे आज की इंस्टॉलेशन की सूत्रधार पीआईडी लायन संगीता जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हम पदाधिकारियों का मान बढ़ाया. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries, including PDGs, all district lion leaders, PSTs, members from various clubs, and esteemed guests for honoring us with your virtual presence and making this ceremony a success. Special thanks to Program Chairman Lion Suresh Gaggar for your dedicated service, and MOC Lion Arvind Kejriwal for conducting the program in a smooth way. Stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you very much. As there is no unfinished business, I request President Lion Neeru Kabra to please adjourn the meeting.
adjourn the meeting. Thank you very much. Host, you can terminate the meeting.